here present our chief guest and the honorable organizer of the program and the most respected teacher of this entire area, Mr. Zakwan sir, who has given you all and me also the opportunity to gather here and to share our views and thoughts that may help us to increase we all of us and develop the qualities that we have here. As the most respected personality and the chief guest of our program, Dr. Saab said, the base you must try to build up as strong as possible, as if your base is perfect, then you can build up multi-story buildings that make you most successful personality of this nation. So I want to share a story of the national father of our country. As you know that, who is the national father of our country? Please, you all tell me. Mahatma Gandhi. And when he gained the knowledge and he stayed in his ashram, a lady came to him with his child, and she said to Mahatma, please tell my child to stop eating the jaggery that you all call the gud in Hindi. She asked the Mahatma, please told my child to stop eating jaggery as his teeth are decaying so quickly. So at that time the Mahatma said, dear, you must go with your child to your home and you must return after 2 days, and then I'll give you the solution. After 2 days, when the same lady came with his son, the Mahatma lovingly called the son and said, dear child, don't eat jaggery. Jaggery is harmful for your teeth, and jaggery is so harmful for your digestion also. And the son agreed, okay Mahatma, I'll stop eating jaggery. The lady was standing beside and she was shocked to hear the views that Mahatma shared, and she angrily asked Mahatma Gandhi, hey Mahatma, you can tell these words on the same day when I came here, but you haven't said. Then Mahatma said, dear, at that time I also eat jaggery. मैं भी तो उस समय जैगरी खाता था, मैं भी गुड़ खाता था, और मैं गुड़ खाता था तो मैं इस बच्चे को कैसे मना करता कि भाई तुम कैसे जैगरी खाओ. So the moral of the story that you must follow the good habits, and then you spread the message of light, the message of good habits and good manners to the entire community. आप पहले खुद अच्छे नेक काम करें और नेक काम के लिए सबको फिर कहें, तो इससे आप सब जो है ना दूसरों के लिए रोल मॉडल बनेंगे, क्योंकि आप वैसे ही किसी के लिए रोल मॉडल नहीं बन सकते. एक छोटी सी स्टोरी प्रेजेंट टाइम को लेके मैं शेयर करना चाहूँगा. देयर वाज अ चाइल्ड हुज नेम वाज
इसका नाम था गिल। एंड वो शाम को सो जाता था। जब उसके पापा आते थे तो उससे पहले ही वो सो जाया करता था, क्योंकि उसके पापा जो थे बहुत बिज़ी थे। हिज फादर वॉज सो बिज़ी एंड सो इंगेज्ड विद हिज वर्क। अपने काम को लेके उसके फादर बहुत बिज़ी रहते थे, वो अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाते थे। तो ऐसे कॉन्टीन्यूसली मंथ्स बीत गए। अब वो 2 और 3 इयर्स ओल्ड बेबी काफ़ी परेशान रहता था, क्योंकि उसके फादर ही उसको टाइम नहीं दे पाते थे। तो एक दिन वीकेंड का डे था और सैटरडे के दिन वो शाम को पापा के आने का वेट किया उसने। और पापा जब उसके आए तो वो जगता रहा उस दिन वो चाहता था कि मैं पापा से बात करूं। तो जब वो पापा आए उसके, तो वो दौड़ के पापा के पास गया और उसने पापा से पूछा, फादर हाउ मच वुड यू अर्न इन एन आवर? आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? आपकी 1 घंटे की इनकम कितनी है? तो फादर ने कहा, वाई आर आस्किंग द क्वेश्चन लाइक दिस? तुम इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, प्लीज़ टेल मी फादर प्लीज़ आप बताएं मुझे, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बस आई वॉन्ट टू नो द इनकम यू अर्न इन जस्ट 1 आवर। देन फादर थिंक फॉर अ लिटिल टाइम, देन ही सेड ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़। तो जैसे ही उसने सुना उस बच्चे ने, वो दौड़ के गया और जल्दी से उसने जितने भी वो गुल्लक बनाए थे ना, वो सारे तोड़ के और 3000 रुपीज़ कलेक्ट करके लेके आया। और उसने फादर को दिया कि प्लीज़ फादर आप मुझे अपना 3 आवर दे दीजिए और मैं आपके साथ चल के पिकनिक करना चाहता हूँ और आपके साथ थोड़ा फिल्म देखना चाहता हूँ, डिनर करना चाहता हूँ। तो फादर को बहुत शेम फील हुआ और फिर उन्होंने वो फील किया कि मनी कांट बाई एनीथिंग, पैसे से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। तो आज के टाइम पे मैं ये जो थ्योरी है, जो अभी मैंने स्टोरी सुनाई, वो बच्चों पे भी लागू होती है। बिकॉज द टाइम ऑफ मोबाइल इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, यू ऑल्सो नॉट गिविंग द टाइम टू द फादर। आप भी अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते हैं। प्लीज़ अपने पेरेंट्स को टाइम दें और उनकी रिस्पेक्ट करें और बी अ गुड मैन, बी अ गुड पर्सनालिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।